Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. So Prakash, introduce yourself. Okay. Hello, sir. First of all, I would like to thank you for giving me time to introduce myself. I am Om Prakash Chaudhary. I have done my BTech in Chemical Engineering from IIT Delhi. And my roots are from Bihar, so I have done my matriculation and intermediate from Bihar. Instead of doing internship in my third year in any industry, I have done a project in my college itself, and that project I continue in my BTP project. And I am my project was the WEEE waste recycle of waste electronics and electrical equipment. I am fond of doing poetry, writing, doing poetry and solving Rubik's cubes. And there are two siblings in my family. My mother is a government employee. And thank you. Okay, तो प्रकाश कोई पोएट्री सुना दो यार. Okay, what do you want to like love story type or फिर थोड़ा political type? Political type सुना दो, political type. Okay, this is my favorite poem. Like सब एक बैकग्राउंड बताता हूँ. अगर गांधी जी अगर होता और मैं अभी के सिचुएशन में होता तो मुझे अपने भारत देश को देख के कैसा लगता, तो मैं बताता कि बापू अपने आप पे हम शर्मिंदा हैं, तेरे सपनों के इस भारत में न जाने कैसे हम जिंदा हैं. यहाँ तो बस हो है सत्ता पाने की, कहीं वीएम हटाने की तो कहीं वॉलेट लाने की. यहाँ सब लोग कोशिश में हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, लगता कोई मोल न रहा मौलाना के उन बलिदानों की. यहाँ हर बात पे पड़ोसियों की होती करी निंदा है, बापू अपने आप पे हम शर्मिंदा हैं, तेरे सपनों के इस भारत में न जाने कैसे हम जिंदा हैं. Okay, great. तो मतलब तुम्हें अपने कंट्री से काफी कंप्लेंट्स है कुछ ना? Not like this government. जब इस गवर्नमेंट ने 2000 इस टाइम जब आई थी उस टाइम पे मैंने रिसेंटली लिखा था, जस्ट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट. Okay. 2019 में 2014 में? नहीं इस साल रिसेंट 2019 में. Okay. So you are not happy with the party in power? I am not anti BJP, but I am the policy that are making. I am not happy with that. Okay. So what according to you should be the policy जिससे देश का भला हो? Like there is a policy they introduced in new Shiksha Niti. In this they told about the main emphasize focus on the Hindi. But our curriculum there is not. When I talk about the UPSC exam, then the Hindi translation of English is very bad. Some students are lack of the English knowledge. They are not doing well in that exam and other exam also. So if you are saying that we have to focus on the English, we have to focus on the Hindi and one other regional language, and on other side you have to main emphasize on the English. Then there are the two different things that they are conflicting each other. But don't you think that the changes that has introduced in the new education policy that will take time? Some things are good, some things are good, some things are bad. I am talking about the bad things. The same thing that you were talking about the language, yeah. That the new education policy they have focused on the Hindi and one regional language also, but still our whole curriculum is there in the English only. So don't you think that it will take some time to change the pattern? The change in the policy is there, but I think the ground will take time. Oh, I think it will take time, but instead of they are more emphasizing on Hindi, they will, I think, more focus on the English. I know Hindi is the Matrabhasha and there is some touchment of the all Indians from the Hindi, but we have to focus on the how we can compete from the world. How we can. I don't think when I was in 10th class, I don't have any English exam. Just I have to write in my original mark sheet. I don't have any contribution of English in my all over percentage. I have to just sit in the exam and get out from the exam. There either you get 0 marks or 99 marks. It doesn't matter in your all over mark sheet. Okay, great. Okay, so Prakash, tell me a little bit about your project here, WEEE. Explain your project. So there are a huge industry. They are producing the, more of the electronics project, and the residue from the electronics project are going to waste after their use.
So what government did, government passed an act in most of the country that those country who produce the equipment are also responsible for the recycle and recollecting of that material after that use. So there are two type of material basically used in the WEEE. One is the metal, another is the plastic part. And my project was the focus on the plastic part. How can we recover plastics from the WEEE and convert them into the reusable fuel? So what I had done, I collected from the most of the departments, hostels, and on over the college campus, like PCB, printed circuit board, mouse, and useless calculator, chair, and trace them out. And trace them into the small pieces like around 30 and 300 micrometer by the sieving process. I calculate this. And after this, we put into the CSTR and do the pyrolysis process at a temperature of 350 to 450 degrees Celsius and pressure of 1 atm. Then what we get that initially in our reactor, both are the present. Present means the plastics and the metals, both are present in the reactor. But when we do pyrolysis process, then at 350 degrees Celsius, the melting point of the metals is too high, and the plastic we melt at making the vapor form at around 400 degrees Celsius. So the plastic convert into the vapor form, and we can collect in the vapor form, vapor, and condense them and get the liquid form, and the material as it is reside into the reactor. And after that, recollecting the fuel, condensed oil, we compare the some of the properties of that oil with the industrial waste oil, like a specific gravity, like density, like appearance, and like calorific value. From that, and what we have noted down that our oil that we get from our pyrolysis process was highly halogenated, means more of the brominate and chlorine are present in the air that are not the good calorific value. So we can use a alternative of that fuel. So what I have done for remove that chlorine and bromine, there are two methods. One can use the biomass as additive, and other can be use the CA product like CaOH2. We can use an additive. So if we can use biomass as an additive, then what biomass can do? There is a huge amount of hydrogen present in the biomass. So then hydrogen combined with the chlorine or bromine, and then form HBr and HCl, and they are in the gas form. They can be out from the chamber, out from the our reactor. If we can use CaOH2 as additive, then what we can get CaCl2 and CaCl2 and CaBr2 that are in the solid form. So they are remain in the reactor. So but after that remove the halogenation process, but we get around originally the calorific value of the petrol are around 46 megajoule per kg, and what I get around 43 kilojoule megajoule per kg. And the same process from the literature survey, what I get around 45 megajoule per kg. So that are the outcome that we get from the our project, and I can use that oil in the some industry, like some industry not. I can use that oil in the scooter and the scooty when they get the good efficiency. Okay. Prakash, you tell me that in your project you said the HCl and the HBr getting produced. So those HCl is sent out of the reactor in the vapor form. They send out it in gas. They are from the HBr and HCl the gas. So HCl, whenever HBr are in the gas. Yes. HCl vapors are in the gas. Yeah, I think if I'm not wrong, then HCl and HBr the gas, then they will out from the reactor. Because if HCl and HBr is there, then the process will become corrosive, and then you have to selectively choose the material of construction. No, there is not in the lab we can do directly gas out. There is a pipe connected and that gas, there is two things. One is the vapor connected in the
one is the vapor point there is connected that we can condense, and one pipe there is a gas leak out. So they That we are pipe connecting also, the, for the material of construction of that pipe, we need to take care, yeah, na? Because yes, HCl sir. vapor is going on in that pipe. Yeah. What is the material of construction of that pipe? I don't remember actually that all setup are, I don't do any setup. That setup are already in our college. So I just have the put experimental part. Setup are already So your done BTP in the project college. is just an experiment. The setup Yeah. is there, the process Yeah. is already there. You just did. Yeah. I have to do some theoretical part, and then I have to construct that experiment and compare that to the industrial world. So as a chemical engineer, what you learned from the whole experiment? Is there So any what I learning? learned in the whole experiment, government are, as we know, the while crisis are we are more dependent of the South Arabian country like Saudi Arabia and Kuwait like that. So we can do, and we have the most of the, we have so many of like WEEE waste products. So we can and set up on R&D. I don't know government has only set up R&D in college or not, but if not, then government have to think about it that you can sort with one other department in R&D and only focus on that area. And they Have could you be calculated? Have you did the economic analysis of your project? Did you do the economic analysis of your project? economic means that the cost that we are getting to. That means how cheaper it is to recycle. Recycling is one thing, but recycling at a cheaper price, it's one thing. So recycling is not a very costly, because as we know, all things that are being some of the base things. So no one would charge for you for the base things. So only the process that that cost, like when the from the industry based oil, we can we can extract the crude oil, and then we go to the refinery, and then we get The process that you explained, the process that you explained looks costly. You need to attain a temperature, you need to have a reactor, a pipeline system and everything. So it looks costly, that it has an operating cost, it has a fixed cost, it looks costly. That's why I'm saying that, did you carry out the economic calculation? Sir, I did not carry. No, sir, I did not carry. Okay, so maybe this project is a very big achievement, or maybe this project is just a complete waste. Because only after the economic calculation we can say that how better is the project. Yes, sir. So that means your BTP project, maybe it's an achievement or maybe it's a waste. Because as a chemical engineer, you didn't do the setup. The process is already there. You just performed it. There is no chemical engineering as such. Anyone can perform it. Let's say if I go to the civil engineer and tell him, sir, this is the process, this is the setup, perform the experiment, he will also perform. Then what the chemical engineer is doing there? If the process is there, setup is there, तो तुमने किया क्या उसमें फिर? तो कोई भी कर सकता है. It's just like the lab experiment. Anyone can go in the lab, learn from the faculty and do the experiment. So BTP होना एक बीटेक प्रोजेक्ट जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई होती है, बंदा को सीखता है, ओके, अपने केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल से अप्लाई करता है. You didn't do that. It's just a process. You just followed the process sequence. You just watch the reactor to carry out the reactions and everything, and just noted down the data. There is no chemical engineering, na? What do you think, Yes. Prakash? Yes, sir. Did you do any calculation things in your project, like in thesis book you might have done something? In calculation means like a calorific value or gravity. We measure the calorific value and the. That's it. Only those formula were already there. You just put it and just calculate it. No, experimentally there is a calorimeter, and then by calorimeter we can know the calorific value of that one. Okay, so how many types of calorific value are there, Prakash?
Sorry, sir. Have you heard about the GCV and NCV? Gross calorific Yeah. value? Sorry. I remember. There is a gross calorific value and there is a net gross calorific value. I just call. There is What is one the thing in net difference? calorific value. Sir, if there is some humidity in that substance, then some energy are lost to convert that to remove that humidity. To remove that humidity. If there some substance are dry, then we get the less amount of energy to the to burn that substance. So as we can, gross calorific value will always less than net calorific value. Prakash, I didn't understood anything. Just think, Hello? what are you saying? I didn't understood anything. Sir, suppose can I tell in Just Hindi? think what are you saying. Just think, and then say. Then Slowly you can respond answer. करो. ठीक, पहले सोच लो अच्छे से क्या आंसर देना चाहते हो, उसके बाद दो. सर, अगर किसी सब्सटेंस में ह्यूमिडिटी है, अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी को बर्न करने में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस होगा. बंद कर रहे हैं मतलब क्या? बंद कर रहे हैं? नहीं, बर्न करना है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू. हाँ, तो ह्यूमिडिटी को वेपराइज करने में हमें कुछ एनर्जी लॉस होगा. ओके. तो अगर कोई ड्राई है तो उसमें हमें ह्यूमिडिटी है नहीं, तो हमें एनर्जी कम लगेगी. तो अगर जहाँ पे ह्यूमिडिटी आ जाती है, उसमें उस केस में जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. और जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं आती है उसको हम लोग बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू. ओके. तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द जीसीवी? Or let me change my question. The calorimeter that you used in your calculations, that calorimeter calculated the GCV or NCV? उसने क्या कैलकुलेट किया था? GCV. GCV. यस सर. That means in your जो भी आपका सेटअप था, जो भी मिक्सचर था जिसका आपने कैलोरीफिक वैल्यू मेजर की, Yes sir, because is present. In our state there is a GCB almost equal to NCV, because we are operating at a very high temperature. So whatever the moisture present in that, they will be vaporized. Okay. So Prakash, calorific value is defined only on the mass basis, or I can define it on the mole basis also? Like generally it is defined in kilojoule per kg. Per kg, yes sir. But can I define it in kilojoule per kilomole? It can be. Okay. Can it define on the volume basis? Kilojoule per meter cube. Yes, it can be. Any example for which the calorific value is defined in the volume basis? Don't know any specific example, but the point is the calorific value is what is the amount of energy we get per kg of the after burning of the per kg conversion of unit mass of fuel. Yeah, complete unit mass, or like unit mass maybe kg, maybe mole, maybe volume. But mass you can express in mole, that is understandable. But mass, how you can express in volume? Yeah. Sorry, it can be mass and it can be kg and mole. I don't think it can be in volume. Okay, you don't think that it is in volume? Yeah. Okay, then how the what is the value of calorific value for the CNG? I don't want the digits, I just want the unit. Petrol I know around 46, 47. Then CNG. I don't want the digit. Petrol. I don't want the numerical value. Just tell me the unit of calorific value for the CNG. CNG kilojoule per liter. So that liter is volume, na? Yeah. So that is defined on the volume basis also. Yeah. Okay. Humidity is unitless or dimensionless? Humidity P1. Humidity unitless. Unitless. So what is the dimension?
dimension is 0. 0? Dimension is when we talk about the humidity, there is the numerator pressure and the denominator pressure, and all are cancelled. There is no unit in the humidity. That is why I asked, na, unitless or dimensionless? You said unitless. Yes, sir. So is it dimensionless or not? It is both unitless, dimensionless. It is dimensionless. It's a dimensionless because I read somebody the kg of water vapor something, so it may be dimension unitless but have dimension. Have dimension. Okay. Prakash, you are saying opposite. आप उल्टा बोल रहे हो. It has a unit of kg per kg. It is not unitless. कोई भी quantity unitless नहीं होती है. The quantity is dimensionless. It's very basic, yeah, Okay. Prakash. It is dimensionless. It's not unitless. Unitless तो कुछ होता ही नहीं है. Word ही नहीं है कोई unitless. ये तो मैंने बनाया है just. Okay. What are the two types of humidity you might have heard? अगर आपने सुना हो. Humidity, one is the relative humidity, one is the specific humidity और absolute humidity. जो एटमॉस्फेयर का हम बताते हैं, you might have seen weather forecast. उसमें हम कौन सी ह्यूमिडिटी यूज करते हैं? Specific humidity. स्पेसिफिक. Absolute और specific humidity. 80% ह्यूमिडिटी है, 90% ह्यूमिडिटी है. What's that? When we are emphasizing on the percentage, there will be relative humidity. 80% means 80% relative humidity. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है फिर? A specific humidity is the I just blank out. I'm so nervous to blank out. Relax. Relax करो थोड़ा. Relax करो. Okay. What are your favorite subjects, Prakash? Relax. CRE. CRE or? Mass transfer. Okay. Mass transfer only. Heat transfer? Heat transfer. Thermo? No, sir. Thermo. No. Fluid mechanics? Yeah. Okay. So can you tell me a little bit about the Murphy efficiency? Yeah, Murphy efficiency means suppose if distillation column are too small, if the column are too small and we have to do some process, then we can't put the tray inside the column. So what we can do the packing inside the column. So say in the distillation column there is a distillation column, the separation happen only due to the tray, but in the Murphy efficiency separation due to the whole chamber. That's why in the Murphy efficiency, in the Murphy distillation column, the Murphy efficiency will be greater than 100. Okay, Prakash, what is my question? मेरा question क्या था? Murphy efficiency. मेरा question क्या था? What is Murphy efficiency? What is Murphy efficiency? है ना? Have I asked that why the Murphy efficiency is greater than 100? क्या मैंने ये पूछा? No. I thought that was the next question. What you answered? You answered why it is greater than 100. What जबकि I asked what is Murphy efficiency? So are you not listening to us properly? That means in the job also you will not listen to your seniors seriously, huh? If we hire you, you will not listen to your seniors. Your mind will answer you automatically. You will not listen to anyone. Why we hire you here? In the corporate, if we have to run such a big organization, then it can be run through a system only, the hierarchy only. But in that hierarchy, if someone is not serious and don't listen to their superiors and seniors, it will be very difficult for us to run the institution. You are not listening properly. My question is, what is Murphy efficiency? And you are answering why it is greater than 100. Okay.
Tell me about leaching. Hello. Tell me about leaching. When we remove some sorry sir. Sorry. Take a glass of water. Take a glass of water. Just relax. पानी पी लो. Just relax. Calm down. 2-3 लंबी सांस ले लो. पानी पी लो, सांस लो, कोई दिक्कत. ठीक हो जाएगा. एक पोएट्री सुना दो यार, कोई प्यार वाली, लव के ऊपर. कौन सा सुना है? एक मिनट. कोई जो तुम्हारी पसंद हो. वो मैंने चंद्रयान पे लिखा था, जब चंद्रयान फेल हो गया था तो उस टाइम पे मैंने लिखा था. Okay. तो हमारे चंद्रयान फेल पे काफी सारे ने काफी मजाक उड़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, खुश तो बहुत होगी आज तू मेरी जगह साई करके, खुश तो बहुत होगी आज तू मेरी जगह साई करके, छोड़ दिया जो तूने मुझे बस सगाई करके, आऊंगा मैं लौट के तुझे अपनी बाहों में भरने, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं जाता दिल लगाई करके. Very good. Very good. बहुत बढ़िया. Okay. So Prakash, tell us what you know about our company. IOCL is the yes sir. Okay, बताओ. IOCL is the one of the downstream company, and that secured the 137 rank in the global 500 rank, and that is the out of 11 refine in all over India there is 23 refinery, and IOCL operate on the 11 refinery, and that it contribute around half of the petroleum products in the Indian market. What are the brands of IOCL? कितने brands में हम deal करते हैं? I think 6 or 7. One is the branch means pipeline division, like you are asking for that, or brand like Extra Mile Diesel is our brand. Okay. Brand. No, I don't know about it. Like the Indian Gas is our brand in LPG. So what are our brands? नहीं पता? Okay. So divisions ही बता दो जो तुम बता रहे थे. Division are the refinery and the pipeline marketing and pipeline market. R&D? Sales, R&D and sales. Okay. Okay. Prakash, do you know that our company has got the Maharatna status? Yes, sir. Can you tell me about the Maharatna status? What is the Maharatna status? Maharatna station is the there is an investment. If there is a gross value, let me wait for 1 minute. Yeah. I'm not sure, so I think it's 3,000 crore, more than revenue 3,000 crore. Then there is a no interface according to revenue generated. There is a divided into Maharatna, Navratna, like that. Forget the figure. I don't want figure. That at what figure you get the Maharatna status. I'm just asking that what is the condition after fulfilling the one we get the Maharatna status. अगर किसी कंपनी को महारत्ना स्टेटस अटेन करना है तो क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? एग्जैक्ट मुझे डाटा मत बताओ, कोई बात नहीं. Revenue. So there is a from figure the last of 3 years. From the last 3 years. From the last 3 years. Okay. So in the last 3 years, if a particular amount of revenue a company earns, then the company gets the Maharatna status. Okay, what is the benefit after getting the Maharatna status? People think that these companies are doing well in their industry. They don't have any less chances of collapsing that company.
Okay, that means if a company has got the Maharatna status, then people got the trust on the company. Yes. If people got the trust of the company, Prakash, then why the share price of Indian Oil is going down from the last 3 months? Sir, it's last 3 months because there is a COVID situation. There's so many of the People most have of the lost share their is trust on going us. down. That means in the COVID situation, people have lost their trust on us. They lost it. No, because people know there is a share market down because of the COVID. They can understand that thing. Prakash, share market is down. Why? Because people lost the trust. They sell the shares, they remove the money from the market. That's why the market goes down. Or they change their investment to some safer investment like the gold. Gold is a safer investment. So just change their investment to the safer investment like the gold and the dollar. So if the people have trust on our company, then people will not sell the shares, no? And then our shares will not go down. Like in the COVID situation, the price of the Reliance is going up from the 1,000. The price is now 2,300. It's more than 1,000% increment. So people have got the trust in the money, but people have no trust on the Maharatna company. So that means Maharatna status is not only meaning trust. Maharatna status doesn't ensures the trust. It ensures something else. What do you think? Yes, sir. Anna? Okay. Okay, heat transfer is your favorite subject, na? Not one of the favorite, but so But average. heat exchanger वगैरह you will tell ना? Pumps, heat exchanger, ये तो पढ़ के आए होगे? Heat exchanger? Heat exchanger and pumps, Bernoullis and all basic. Sir, I am supposed to that I told you Friday, Saturday, and Sunday. That's why I am recently come from the hospital. Actually, why I am humiliating them, I am nervous because I have some heart problem. When I get faced that time problem, my heart rate is too high. So Relax. We will just ask the basic questions. Okay. Deep sir, a little bit basic questions in the heat transfer and the effluent. अच्छा बताइए what is conduction? Conduction is a mode of heat transfer. और आगे Where the conduction is a mode of heat transfer when is the heat is transferred by the molecules by the molecules. Suppose one molecule get heat, they transfer heat from the adjacent molecule, and that adjacent molecule heat transfer to the adjacent molecule, and that the heat transfer proceed. Okay, so in solids, solid, liquid, Yes. and gas, there are 3 states of matter, right? Yes, sir. I am asking, yeah. So how does conduction heat transfer occurs in solid? Suppose I put on the furnace of the one solid rod, then at the first particles of that rod get heated and they transfer heat to the adjacent rod, adjacent particle, and so on. Then the heat will be rod will be heated. Actually, there are some specific terms हैं. Like Fourier law of conduction. Fourier law of conduction. No. I'm not asking about Fourier law. वहाँ तक तो मैं गया भी नहीं. You might have heard about that. The molecules vibrate. Molecules का vibration होता है. Then जहाँ पे high temperature region होता है वहाँ पे molecules ज़्यादा frequency से vibrate होता है. Then वो धीरे-धीरे slow down होता है. And then free electrons होते हैं. Fourier law बता दो. हाँ? Fourier law ही बता दीजिए चलो. उसके conditions और उसका law बता दो. Okay, heat flux is directly proportional to the temperature gradient in direction that heat flow. उसके assumptions कुछ होते हैं? Assumption is assumption.
Okay. Tell me about Hatta modulus. Not remember, sir. Damkohler number? Yes, sir. Damkohler number, you are emphasizing on formula or? जो भी आपको पता है बताओ. हाँ, tau के CA to the power 1 minus n. Okay. What is Peclet number? Peclet number is Reynolds number into Prandtl number. And how it is used in the CRE? CRE में हमने पढ़ा हुआ ना Peclet number. CRE 2 में heterogeneous के अंदर. In heterogeneous? Yeah, Peclet number आता है वहाँ पे. Okay. Prakash, the recording will gonna end. The video will gonna end. So join the meeting again with the same link. Huh? Okay, sir. ये खत्म होने वाली है. ठीक है, तो इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेना अभी. ओके सर. ठीक है. ओके. तब तक पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ. ओके सर. हाँ. Okay. Okay, Prakash. Why IOCL only? Why not any other PSU? IOCL, the reputation of the IOCL, anyone want to work with the reputed company like IOCL in the working environment of the most importantly, the working environment of the company is very good, as my friend told. The company support their employee and at the professional front and to improve their career path. Okay, let's say we hire you. Where you see yourself in next 10 years? Okay, first of all, as I don't have any experience, knowledge is more important for me. So first initially some year, so I will work hard so that I can do something for the growing. I can use my technical skills or whatever I have learned, or I can also learn in the industry to improve the growth of the company. And after 5-10 years, I will assume that I will expected as some reputed position in that organization. Okay. Do you know the hierarchy in our company? At what post you will be hired, and then after the promotion you promote? Yeah, there is a, I think previously there is a U1 and now U1 post there. Officer there is, then there is an engineer, there is a one type GAE, then there is a officer / engineer, then there is a after 3 years there is a promotion. There is I think total 8 or 9 hierarchy in that up to the from beginning level to the MD level. So what is your dream post in that hierarchy? My dream post is the MD. MD. Okay. Who is the current MD of Indian Oil? Sorry, not. And your dream post is MD. Everyone want to be at the higher position. So why I not? आपने कभी देखा होगा ना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, how is trying to do. आपका अगर ड्रीम पोस्ट है तो डेफिनेटली उनके बारे में initially they are joining that like in the U1 post. Then after that gradually they can work hard and they can any of the MD you can name, any previous MD of Indian Oil, any CMD, anyone. It's actually CMD, it's not MD, it's CMD. Not so. Okay, let's say we hire you and then tomorrow ONGC calls. So will you stick to us or
You will leave for because I am not eligible for ONGC. ONGC doesn't have PWD candidate. So okay, गुड गुड, ठीक है। प्रकाश, थोड़े बहुत फीडबैक थे, लिख सकते हो तो लिख लो। Yes sir, my interview are not going bad, so I can improve. Don't think that interview didn't go well. Interview हमेशा अच्छा जाता है। After the interview always there are key takeaways. कुछ takeaways होते हैं। इंटरेक्शन का हमेशा कुछ ना कुछ फ्रूट तो होता ही है ना। तो जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी कि कभी भी ना आप जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज गुड, ठीक है, बट कुछ डिबेटेबल इश्यूज के ऊपर ना जितना बच के रहोगे उतना अच्छा है, स्पेशली इन द इंटरव्यू, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक लैंग्वेज का इशू उठाया, ठीक है, उसमें आपने बोला कि अगर हमें वर्ड से compete करना है या वर्ड में ग्रो करना है तो हमें इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब हो सकता है प्रकाश की इंटरव्यू पैनल में कोई हिंदूवादी बंदा बैठा हो, हिंदीवादी बंदा बैठा हो, है ना, जो कि अपनी मदर लैंग्वेज को, मदर टंग को बड़ा प्यार करता हो। बिकॉज बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं ना कि अगर चाइना चाइनीज बोल के ग्रो कर सकता है, जापान जापानीज बोल के ग्रो कर सकते हैं, तो हम हिंदी बोल के ग्रो क्यों नहीं कर सकते। सो हमें इंग्लिश सीख करनी है आगे ग्रो करने के लिए। ये प्रकाश एक डिबेटेबल इशू है ना, मतलब ये डिबेटेबल है, इसका कोई आंसर नहीं है। सम ऑफ देम विल से नहीं हिंदी ही अच्छी है, सम ऑफ देम विल से नहीं कि इंग्लिश के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कभी भी इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखो, कोई भी इशू ऐसा रेज ही मत करो जो डिबेटेबल है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अलग बात है, बट किसी इशू को रेज करना जो डिबेटेबल हो वो अलग बात है ना। लाइक आपने पोइम सुनाई, पोइम अच्छी थी, मैंने आपसे पूछा कि आपको एंड आपको पार्टी पसंद नहीं है क्या, तो आपने बोला नहीं, कुछ पॉलिसीज है जो मुझे पसंद नहीं है कि इन्होंने जो चेंजेस किए, जो रिफॉर्म्स किए, वो रिफॉर्म्स मुझे अच्छे नहीं लगे, है ना। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप उसको क्लियरली प्रेजेंट करो कि कौन से वो रिफॉर्म है, कौन सी वो पॉलिसीज है। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती है, वो डिफेंस पॉलिसी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। तो क्लियरली उसको आप रिप्रेजेंट करो। बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप एक ऐसे रिफॉर्म की बात करोगे जो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, तो वो एक बहुत ज्यादा डिबेटेबल इशू हो जाता है, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अच्छी बात है, बिकॉज इट इज गुड इन द कॉर्पोरेट की एटलीस्ट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो एक अच्छी चीज है। बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू रखना एक बहुत अच्छी हैबिट है, बट पॉइंट ऑफ व्यू रखते रखते चीजें कहीं और ना चली जाए बस। तो ये मेरा एक फीडबैक था, ठीक है। ओके। और दूसरा जो मैंने आपसे बोला कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट के बारे में जब आपने आपसे पूछा, एक्सप्लेन टू मच, ठीक है। तो होता क्या है प्रकाश की जब भी किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है ना बहुत सारी, व्हेन यू एक्सप्लेन ए थिंग टू मच, तो ऐसी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, हम में भी है, टीचर्स में भी होती है कि यार इसको ना उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। बिकॉज अगर एक जो वाइज पर्सन है जिसने वो चीज को अच्छे से पढ़ा है, तो वो उसको समराइज कर सकता है ना। ऐसा बोला जाता है कि एक टॉपिक और मैं उसको 10 मिनट में भी रैप अप कर सकता हूँ अगर मुझे उसकी प्रॉपर नॉलेज है तो। लाइक क्लास नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम, शॉर्ट नोट्स वही बच्चा बना सकता है जिसने क्लास नोट्स बहुत बार रिवाइज कर लिए हो, है ना। तो अगर आपने प्रोजेक्ट बताने में ही इतना टाइम ले लिया, तो एक फीलिंग मुझे ये भी आई कि क्या इसने प्रोजेक्ट की इतनी डिटेलिंग में स्टडी करी है। अगर करी है तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट ये 5-10 लाइन में बता सकता था कि बेसिकली प्रोजेक्ट किस बारे में है और प्रोजेक्ट से तुमने क्या सीखा है या प्रोजेक्ट की क्या एप्लीकेशन है। अब प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया है ये तो तब बताओगे जब पूछेंगे, बट जनरली एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है किस बारे में, ठीक है, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस प्रोजेक्ट की तुमने क्या इसमें कैलकुलेट किया है, या क्या इसमें तुमने कुछ सीखा है, या इसकी आगे फ्यूचर एप्लीकेशंस भी कुछ है क्या, कि इसको आगे एक्सटेंड करके इसको पेटेंट बना सकते हैं क्या, ऐसा कुछ। तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में 5-10 लाइंस के अंदर आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी है, बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखो।
ओके, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का ना केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव ढूंढो। आज जब इंटरव्यू होगा तो केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिसाइकलेबिलिटी प्रकाश आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारी कंट्री वेस्ट रिसाइकल में बहुत पीछे है वर्ल्ड से, ठीक है। और वो केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसाइकलेबिलिटी हम केमिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल इंजीनियरिंग के चश्मे से तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये पता करना जरूरी है। तो जो भी उसमें केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव होगे उसको एक बार देखना जरूर, ठीक है। उसके बाद जो मेरा फोर्थ फीडबैक है वो ये है कि जो अपने वर्ड्स है ना वो बड़े केयरफुली चूज करो। लाइक तुमने वर्ड यूज किया एससीएल के बारे में, मैं एससीएल के बारे में पूछने लगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछने लगा, तुम्हें नहीं पता था। फिर तुमने वर्ड यूज किया कैलोरीमीटर से, हमने कैलोरीफिक वैल्यू मेजर की, तो हमने फिर कैलोरीफिक वैल्यू पूछी तुमसे, डिफरेंट टाइप्स पूछे, किस बेसिस पे डिफाइंड है वो पूछे। फिर तुमने खुद ह्यूमिडिटी वर्ड यूज किया, तो फिर हमने ह्यूमिडिटी पूछी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस पूछा। तो तुम ही हमें क्वेश्चन दे रहे थे, तो स्टूडेंट ही इंटरव्यूअर को क्वेश्चन देता है कि वो क्या पूछे, बिकॉज इंटरव्यूअर कभी कुछ सोच के नहीं बैठता कि मुझे क्या पूछना है। तो तुम जो वर्ड्स दे रहे हो, बी इंटेलिजेंट इन दैट, वही वर्ड्स दो जो कि तुम्हें आते हो अच्छे से, सो दैट कि जब इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा तो तुम वो इजिली बता पाओगे, है ना। तो इसमें बोला जाता है, इंग्लिश में स्टेटमेंट है, बी ए प्लेयर, बी ए प्लेयर, कि इंटरव्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, कुछ ऐसा करो, इंटरव्यू रन्स अकॉर्डिंग टू यू। तो सामने वाले के मुंह में वही शब्द दो जो तुम्हें आते हो, अदरवाइज शब्द ही मत दो, है ना। चीजों को एक्सप्लेन करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, हमें तो पता नहीं तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी, तुम जो बताओगे हमें वो पता लगेगा। तो तुम बताओ ही वो चीजें जो तुम्हें आती हो, है ना। तो वर्ड्स बहुत ध्यान से, और बहुत बड़ा फीडबैक है यार, ध्यान से सुनो पहले चीजों को ना, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है कि तुमने क्वेश्चन सुना व्हाट इज मर्फी एफिशिएंसी एंड यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज ग्रेटर देन 100। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पहले से प्री अजम्पशंस है माइंड में, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। बट प्रकाश इंडस्ट्री के अंदर ना सेकंड्स का खेल होता है, जब अलार्म बजता है ना अफरा तफरी मच जाती है हर जगह, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर सब आ जाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अलार्म क्यों बज रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस में ना माइंड को सेकंड्स में काम करना होता है, तो वहां पे प्री अजम्पशंस पे काम नहीं चलता, ठीक है। वहां पे गाइडेंस लेके सीनियर से वो काम करना होता है जो काम हमें दिया गया है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर। अगर एक लोअर लेवल पे कोई एम्प्लॉय ने कुछ किया है ना, तो वो ऊपर लेवल तक बात सबको पता होती है। दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द हायरार्कीज। अगर एक ग्रेड ए ऑफिसर ने कुछ काम किया है अच्छा या बुरा, तो वो ग्रेड ई तक सबको पता होता है, बिकॉज ये कम्युनिकेशन चैनल है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के नहीं चलती, और अगर हम सुनेंगे नहीं और अच्छे से उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो दैट कैन अफेक्ट नेगेटिवली टू द इंटरव्यूअर, तुम्हें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो कभी भी इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि तुम उसे सुन नहीं रहे हो। सुनो, सुन के पोज ले लो, 5 सेकंड का पोज लो, 10 सेकंड का पोज लो, पहले सोच लो कि तुम्हें क्या बोलना है और फिर बोलो। तो बोलते हैं ना हिंदी में, पहले टटोलो फिर बोलो। तो पहले टटोलो तुम कि क्या बोलना है, फिर बोलो, ठीक है। और कभी भी इंटरव्यू में एक वर्ड यूज मत करना, आई थिंक, आई थिंक यूज नहीं करना, है ना। इसके बजाय आप यूज कर सकते हो इन माई ओपिनियन, बिकॉज ओपिनियन रखना इट्स गुड हैबिट, बट तुम जो बोल रहे हो तुम्हें लगता है ऐसा है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, सो दैट इज नॉट गुड, है ना, दैट इज नॉट गुड। श्योरिटी नहीं आती उसमें। फिर अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम्हें लग रहा है, वो श्योरिटी नहीं है। बट अगर तुम बोलोगे इन माई ओपिनियन, सो दैट इज ए वेरी जेनरस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर पॉइंट, इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ फीडबैक्स थे। बाकी दीप सर आपको कुछ लगा हो तो आप प्लीज बता दो। मोस्टली तो आपने सर कवर कर ही दिया। बट मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो आपने बोला उस पर थोड़े अच्छे से काम करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हीट एंड मास ट्रांसफर बोल रहे हैं, मैंने बस एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ,
यस, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। और जब आप बता रहे थे ना, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया, आप अपने हेड को बहुत ज्यादा इधर ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगता, मतलब मे बी उसको गलत फीलिंग आए, मतलब वो आप बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहे थे। लाइक मतलब कोशिश करो आई टू आई कांटेक्ट रखने का, मोस्टली नहीं रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ट्राई करिए। अगर इंटरव्यूअर सामने है और आप बाजू में देख रहे हो तो इम्प्लाइज मतलब थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। डिसरिस्पेक्ट फील होता है, बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और यस, लिसनिंग स्किल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, Yes, sir. क्योंकि आपके अंदर अगर लिसनिंग स्किल सही तरीके से नहीं होगी, तो आपका सीनियर आपको जो गाइड किया होगा, आपको जो बताया होगा, उसमें थोड़ी सी भी चूक होगी, है ना, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि इन केस उससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है हमारी कंपनी एग्जैक्टली। को या कुछ भी। तो लिसनिंग स्किल अगर नहीं समझ में आए तो पूछिए प्लीज, फिर से बोलेंगे क्या, एक बार ऐसे करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया एक। और बाकी IOCL के बारे में जब हमने क्वेश्चंस पूछा आपको, तो उसका भी आपने उतना Okay. मतलब Yeah, आप, CMD, हाँ, थोड़ा hierarchy, बैकग्राउंड hierarchy रिसर्च, position. कुछ क्वेश्चंस Yeah. होते हैं एकदम टॉप 20-25 क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, 90% टाइम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना। एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अच्छे से वो करिए, आंसर प्रिपेयर रखिए, है ना। और जब आप आंसर कर रहे हो ना, बहुत जल्दी 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 बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारे पास क्लियरली कन्वे नहीं हो पा रहा। ये चीज हमने नोटिस किया। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी है ना, तो ये बस चीजें ध्यान रखना